Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Students, see the next question. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of families. Also find the mean monthly expenditure. यानी यहाँ पर हमें कुछ फैमिलीज का एक्सपेंडिचर का डाटा दिया है, यहाँ पर मोड भी निकालना है, मॉडल एक्सपेंडिचर दैट इज, एंड मीन भी निकालना है दैट इज मीन मंथली एक्सपेंडिचर. सो स्टूडेंट, मोड के लिए हम यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40 ऑफ क्लास 1500 to 2000. So it is our model class 1500 to 2000. Now L is lower limit of the model class is 1500. F1 frequency of the model class is 40. F0 frequency of the class previous to model class is 24. And F2 frequency of the class next to model class is 33. And H, that is size of model class, is 500. Now mod is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by H. Now इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट कीजिए. What we get, 1500 plus 40 minus 24 upon 2 into 40 minus 24 minus 33 multiplied by 500. स्टूडेंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1500 प्लस 16 अपॉन 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500 एंड दैट विल गेट 1500 अपॉन 16 की मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो 8000 अपॉन 23. डिनोमिनेटर को माइनस कराकर 23 आया. नाउ 8000 अपॉन 23 विल गिव 347.83. Now the mode is equal to 1847.83. स्टूडेंट, मीन मंथली एक्सपेंडिचर के लिए हमें मीन निकालना पड़ेगा और मीन के लिए अगेन हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसीज की और क्लास की हाई है. तो मीन के लिए राइट डाउन एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज फ्रीक्वेंसी. नाउ क्लास मार्क xi is equal to 1000 plus 1500 upon 2 will give 1250. And next class 1500 plus 2000 upon 2 is 1750. So on 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 and 4750. Now let assume mean A is equal to 2750. And H class size here is 500. So UI is equal to xi minus A upon H. तो फर्स्ट क्लास के लिए UI स्टूडेंट क्या होगा, 1250 minus 2750 upon 500. It will give -3. And सेकेंड क्लास के लिए UI -2, थर्ड क्लास के लिए -1, फोर्थ के लिए 0, then 1, 2, 3 and 4. Now multiply Fi to the UI. What will you get? 24 into -3 is equal to -72. 40 into -2 is equal to -80. So on -33, 0, 30, 44, 48, 28. Now summation of Fi is 2200. Summation of Fi is 200 and FIUI is -35. Student, X mean is equal to A plus sigma FIUI upon में Fi multiplied by H. Put down all values. So 2750 plus -35 upon 200 into 500. Student, solve कर यहाँ पर क्या आएगा, 35 into 5 upon 2 that is 87.50. So 2750 minus 87.50 will give 2662 minus 50. So this is our mean monthly expenditure.
So the modal monthly expenditure of family is equal to rupees 1847.83 rupees, and the average monthly expenditure of families is 2662.50.